Aidan Markram. As usual, may I please ask that everybody keeps their questions in the chat panel. We won't be recognizing any raised hands, that everybody keeps their monitors on mute, please, so that we'll be able to have clarity in the recording. We'll start with Nathan, Telford, and Stuart. Morning, Aidan. Aidan, I just wanted to find out what was the message coming into play today from management in terms of batting today? Look, obviously it was a big target that we were chasing, but the message was pretty much to just break it down into smaller targets along the way. We always knew that the closer we got towards tea time and then post tea time, we would certainly stand a good chance if we were still batting. So that was a message. It was to not be scared to go out and win a game of cricket and not play with any fear, but rather to go out and express ourselves and try to pull off what would have been a good win. Telford. Hello, Aidan. Well played and bad luck. Cricket is a strange kind of team game in that there's a lot of room for the individual in it, and I wonder what it feels like to have played one of your very best innings in difficult circumstances under huge pressure, but it essentially comes to nothing because the game's been lost. And how do you feel about all that? Yeah, well, ultimately, we as sportsmen are highly competitive people. So to lose a game to lose a series is certainly something that eats more at you than maybe one or two personal performances that might have gone all right. So certainly a lot more hurt than satisfaction from my side. It felt like there were stages throughout the series and throughout this game where just when we started making some good progress and maybe getting ahead, we'd sort of give it away. So that's where the hurt comes from. But it's time for us to take lessons and to learn and to not make the same mistakes going forward. Stuart. Hi, Aidan. Well played. On that talk about taking lessons going forward, the batting collapses have now become a real habit, and it's something that's gone back a couple of years. As a batsman and as one of the top order players, what do you see the reasons for those being? And in taking lessons, how do you work to resolve them? Look, I think you have to, I said it last week, you have to appreciate the fact that we're in the subcontinent and getting in becomes really tough or is really tough. And the nature of the conditions often suggests that wickets will fall in clusters. So obviously we haven't got the solution for it, but lessons will be to try to keep minds nice and calm and clear when going out to bat, just to get through those first 20, 30 balls, just to settle the nerves. And normally once you're in, it does slowly but surely get a bit easier. Khalid H. Khan. Aidan, first of all, congratulations. In terms of your development as a player and playing in the subcontinent, where would you rate this century of yours? Look, it's innings I've taken a lot of learning from. Obviously, I've had struggles in the past in the subcontinent and playing sprint, so it's nice to be able to learn here and pretty much learn on the job, which is a nice place to be. So yeah, it ranks high up, like you say, but at the end of the day, to have still been out there now, getting us close to that target and over the line would have been the ideal scenario. Rashid, followed by Ken and then Kuliso. Ken, you can go. Thanks, Shibakazi. Hi, Aidan. Very well batted. You started the summer with maybe a question mark against your name in terms of cementing your place in the test side. You've now done that. If they had to come and offer you the captaincy for whenever the next test series is, it might be at the end of the year,
would that be something that you would feel comfortable about? That you feel settled enough in the team? To be honest, Ken, I haven't given it too much thought. I don't think what's it been now 4 test matches this season allows a player to all of a sudden think very differently and think along those lines. It's something, like I've mentioned before, that I would naturally enjoy doing, but certainly nothing I've given too much time of day to. I said it in the build-up to our season starting back at home. My job is ultimately to score runs and win games, so that's still the focus for me. It's difficult to say what's going to happen, but we just take it day by day. Last questions are Khuliso, Fidos, and Tyron. Okay, we'll skip Khuliso. Fidos. Hi, Aiden. Well batted. Aiden, is it possible for you to describe for us the kinds of feelings that the team is experiencing, just given the pressure of knowing, victories are not coming? There's a lot of questions over the batting. Just what is the mood and the morale like? Look, obviously the mood's pretty down at the moment. It's never nice losing matches and losing test series. Like I mentioned earlier, we're highly competitive people, so it does definitely leave a bitter taste. It's obviously a time where we are blooding new players. We've had a few really good players leave us over the past couple of years, and big roles or big shoes to fill going forward. So that's where we are as a team. Obviously, it's never nice to lose. Like I've mentioned, there's been patches through the series where I felt like we actually played really good cricket and we looked apart. But unfortunately, couldn't do those or be in those patches for long enough. So that's ultimately the feeling now in the camp. It'll take a bit of time to reflect and see where we can improve. And hopefully when it matters, we can deliver. Tyron. Aiden, obviously, well done in your innings, mate. And look, I mean, obviously, frustration again is that now with Australia having cancelled their tour, our next test action is currently scheduled for December. Having found some good form yourself, that must be quite frustrating. And has there been any talk between the team trying to organise something in between? Yes, thanks, Tyron. To be honest, from a player's point of view, obviously we haven't been querying future series that could potentially take place now that Australia is cancelled. If it were to happen, obviously it would be great, and we as players would be over the moon with it. But yeah, it would have been nice to have played against the Australians now in our home series. Obviously, it's always a really exciting series to be a part of, and normally quite good cricket on display as well. So obviously, it's not ideal that series isn't going ahead. We're just going to have to wait over the next couple of weeks to find out if there will be, or let's put it this way, when the next test series will be for us. Thanks very much, everybody. Please hang tight for Mark Boucher. Hi, everyone. We've got Mark Boucher standing by. Craig, are you still interested in taking a question? Yeah, I'll ask it to Mark if it's fine. Hi, Mark. Disappointing. The batting shortcomings, is it a mental thing or a technical thing at this stage, do you think? I think more mental. If it's technical and guys are getting out in the same sort of ways every time, then you can look at that. And then I think this group of players, we're continuously working on little technical things that we can improve on. Sometimes you're going to wake up and not everything feels great from a mental perspective. That's when you need your technical side to pull you through. But I think it's more the mental, to be honest with you. I think there's a lot of scars from past tours to subcontinent. I've seen the guys who have had a couple of technical issues in the past, a guy like Aiden come through and just mentally get through it, spend a bit of time at the crease and fight his way through it. And I mean, he showed with what he can do out there today, scoring unbelievable 100 in
tough conditions on day 5. So I'd say it's more a mental than anything else. And if I could just quickly follow up on that, how do you correct it when you've got no Test cricket to come? I mean, that's a big challenge for you. Well, there are always to correct it. You know, we keep talking about the mental side of batting and mental application. We just seem to, the big moments when we really need to drive home an advantage, you know, when we start getting some sort of partnership, we seem to find ways to get out. You know, look at the first innings where Temba and Vian really looked like the game was getting easier and they were building up on a partnership. We get a run out. I mean, it's just stupid ways of finding ways to get out in really important moments in the game that, from a batting perspective, has just really cost us. In the first test, 2 run-outs in the first innings in your top 6 batting it's always going to put you under pressure. Kanyisa followed by Telford and Khalid. Please note, 1 question per person. Good afternoon, Mark. Hard luck with the result. The senior batsmen being Quinton, Dean, and Faf only put together 81 runs in the entire test match. How disappointing is that? That the senior batsmen failed to rock up? No, it is disappointing. I suppose, you know, if you want to have a chance of winning a Test series in foreign conditions, no matter where you are, you need your senior players who have been in those sort of conditions before. You know, I know no one's been to Pakistan, but it's sort of a subcontinent mindset, albeit a little bit different to India and Sri Lankan conditions. They should sort of know what to expect. So you need your senior players to stand up. Unfortunately, it didn't happen this series. You know, maybe a perform. You know, I don't know. I can't really put my finger on it at the moment, but I certainly do know that if you're going to win a series away from home, you do need some senior players to stand up and perform. And unfortunately, it didn't happen. Telford. How's it, Mark? Bad luck. Batting collapses are nothing new for any team. You know, they're part of cricket. Do you remember in your playing days, you know, how you managed to get a team out of a batting collapse or a string of batting collapses? What was the key to fixing them in the past? Well, I don't know. To be honest with you, I mean, we never really had like major batting collapses. I think it's also due to the fact that we had quite a few all-rounders within the side. In the recent past, we haven't had those all-rounders. You know, we added an extra all-rounder to the equation this game, and it didn't seem to work. It seemed to work in the first innings a bit. You know, we put ourselves under pressure by being 4 down quickly, and then sort of gathered some sort of momentum. And as I said, we gave that momentum away. This particular game, I think, yes, we're in the subcontinent. The new ball played a massive role in that collapse as well, which can happen, but not to the extent of losing 7 wickets for 30-odd runs. You know, that's a major batting collapse, especially when you're looking to chase down a total. So yeah, I mean, I think it's a few things. I think there's, as I said, the mental application, the match awareness. I think our match awareness with that new ball wasn't quite where it should have been. You know, we needed to understand that new ball, and we spoke about it, was going to be vitally important to get through. The history of the games over a year, you know, when that new ball is 15 to 20 overs old, then it gets a lot easier to bat. So we need to look after that 15, 20 overs, and we didn't do that, and they picked up wickets. And that's unfortunately what was the reason why we suffered that huge batting collapse. Mark, were you surprised by the way pitch behaved over the last 2 days? I mean, it got better and better coming to the back end of the test match. Secondly, when you were 241 for 3, what was going through your mind at that particular time? Sorry, Khalid, we asked for 1 question, please. So he'll answer the first. Okay, answer the first one. I can't understand the first one. Sorry. Question, please. What I'm saying is, would be surprised by the way pitch got better and better over the last 2 days of the match compared to the first 3 days? Yes, very much so. When I saw the pitch sort of 2-3 days before, it had a bit of grass on, then they cut the grass and it cracks. It looked very puzzle-like. So I honestly thought that it was going to deteriorate in a massive way. And just the way that people are talking about the ball taking on a spin, it seemed to pick up a bit of a crust, which made the whole surface a lot harder, and it held together very well. And I thought it was a fantastic test wicket. You know, as we saw, there was something there.
it's something that is as well. And if you applied yourself mentally with the bat, then you could score runs, as Aiden showed in the last day. So I thought it was a good wicket that held together a lot better than I thought it would. Last questions, guys, is going to be Shafiq, Ken, Fidos, and final question with Tyron. Hi, Mark. You didn't have chalk colors here on this tour. Who actually worked with the batsmen with regards to technical issues? I know Justin Ontong played as a test batsman, yourself, obviously, and Enoch Inkwe was a first-class all-rounder. So who worked with batsmen on technical issues? Well, a couple of us. I'd say I worked with guys technically. Ontes, he takes quite a few of the batters as well, and you know, we haven't got a batting coach at the moment, specific batting coach. So myself and Ontes and even Enoch at certain times will have a look at the guys and see how we can help. Yeah. Ken. Mark, one of the senior batsmen that you were talking about is obviously the captain. Do you feel the captaincy has actually negatively affected Quinny's batting? Difficult one to answer. You know, if he'd scored runs, he wouldn't be answering this. You know, and I think batters go through periods where they score and they maybe don't score. Quinny, you know, unfortunately, it's been when he's been having the captaincy as well. So yeah, maybe. You know, it's difficult to answer yes or no because batters do go through sort of lack of form at certain times. And I think that the big thing is that when you are captain, everything gets highlighted. And obviously his lack of form now has been highlighted and people point and saying, is it because of the captaincy and that? And maybe it is. You know, we'll have these discussions when we get back home. I'll sit down with the selectors, the convener selectors, and have these discussions to see, you know, the way going forward. We have got a bit of time now once we get back to make a non-emotional decision, but a smart decision on the way forward. And you know, if it is sort of looking at someone else to take over that reign in a permanent job, I think the time's probably now to do it because we have got a bit of time. We can give that guy a few months to sort of get his way in and listen to what thoughts he's got in regards to this test team going forward. Fidos. Mark, we're obviously talking a lot about the batting, but if I could just get your thoughts on the bowling. So we saw some really good performances from the Pakistan seamers. How do you reckon South Africa matches up, and did anything stand out for you from the performance in the field? I thought maybe one or two sessions we let it slip a bit with the bowling. I thought our bowling was fantastic on this tour, to be honest with you. The big difference is fielding. We look at this game in the second innings, they're 80 for 5. We have 2 drop chances in 2 balls. That's 80 for 7 with the tail in with no frontline batter batting with them. We bowl them out for 100. If you give them extra 50 runs, we bowl them out for 120. We end up chasing 220. We win the game and wouldn't be, arguing about all these things. So just big moments really cost us and a match awareness of when to turn the screws up or tighten the screws. We lacked, and that is the reason why we lost the game. Pakistan, on the other hand, they took some fantastic catches when they were offered those opportunities. So we didn't bat well, we didn't field well, but I thought our bowling was one thing that really stood out. We saw some really great spells from guys. Our opening spells were fantastic with KG and Anrich. If we had held up onto our opportunities, we created opportunities, we just didn't take them. And that ultimately cost us, in this game alone, I think about 150 runs. Final question, Tyron. Yeah, Mark, obviously you've spoken about the drop catches and a lot of the dismissals being frustrating, but how much of that do you think is down to just the lack of cricket that the guys are getting currently? We've been playing. I mean, we've been in bubbles and we've been training a lot of sessions. You know, I think that lack of match intensity is something that we can look at. The stop-starting of different tours and the mixing of the different sort of formats. You know, it'll be good to actually hopefully get some 4-day games in the domestic sort of competition and get everyone playing.
because I think that is sometimes where the guys get some good confidence, and the match awareness really gets highlighted as well. So no, we're not looking for excuses. I don't think that the reason why we didn't perform in this series was because of lack of cricket. I think the guys have played enough cricket, put in enough time in the nets and all that type of stuff. Will it benefit us for playing a bit more? Yes, it probably would. If we can do that, then hopefully we can. It's trying times at the moment. Hopefully we can get back to some sort of normality and get the guys playing more cricket, because I think it will benefit them in the future. Thanks very much, everybody, for joining us. For tomorrow at 6 a.m. Pakistan Standard Time, which is 3 a.m. South African Standard Time. Thank you very much for joining us. And I'll be sending out a media advisory on... बाबर आजम हमारे साथ है, पाकिस्तान टीम कैप्टन विनिंग सीरीज, और बाबर में आपसे कुछ कॉन्फिडेंस सीरीज का, और डेफिनेटली 2-0 जीते, कितना कॉन्फिडेंस है प्लेयर्स पे और कैसा देख रहे हैं आप? पहली बात तो अल्लाह का बहुत शुक्र है, और थैंक यू करना चाहता हूँ साउथ अफ्रीका को टीम को जो आई और कम्पिटिटिव क्रिकेट खेली और इतने अच्छे आपको मैच देखने को मिले। बिल्कुल जीत से बिल्कुल कॉन्फिडेंस आता है, एज अ टीम एज अ पूरा ग्रुप काफ़ी कॉन्फिडेंस आया, और आपके सामने लड़कों ने इतनी अच्छी सी परफॉर्मेंस दी है। अगर मैं बात करूं रिजवान की, जिस तरह उसने आउटस्टैंडिंग, एक टाइम पे हमें लग रहा था कि यार 250-260 पे हम स्टिक करेंगे, लेकिन उसने जो इनिंग्स खेली और उसके साथ उस इनिंग्स के साथ जो नुमान ने खेली या शान ने उनका साथ दिया, तो वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा वाइटल रन्स थे जो उन्होंने उस दौरान किए, और जिसकी वजह से हमें इतना अच्छा टोटल मिला। उसके बाद फिर बॉलिंग की बात करें तो वो हसन अली आउटस्टैंडिंग कमबैक, और जैसे उसने 1 साल बाद आया और जैसे वो जिस तरह उसने कमिटमेंट शो करवाई, जिस तरह उसने अपना एक्सपीरियंस शो करवाया, देखें मेरे ख्याल से ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं एज अ टीम, कि आपका इंडिविजुअल परफॉर्मेंस नहीं होती, लेकिन सब ने कहीं ना कहीं अपना रोल अदा किया है, जिसके भी हाथ में जो चीज़ आई वो फिनिश की है। बिल्कुल थोड़ी जगहों पे हमारा मिस्टेक्स हैं और मजीद हम कोशिश करेंगे उस चीज़ को इम्प्रूव करने की। थैंक यू बाबर। क्वेश्चन आंसर सेशन प्लीज। खालिद खान, शाहिद हाशमी, माजिद भट्टी एंड मोइशा साहब प्लीज। अस्सलाम वालेकुम बाबर, सबसे पहले बहुत बहुत मुबारक हो, माशाल्लाह आप लोग सीरीज 2-0 जीत गए। अच्छा ये बताइए कि जब साउथ अफ्रीका की पार्टीशन चल रही थी मैक्रम और बमुआ के दरमियान, तो उस वक्त आप लोगों के जहन में क्या चल रहा था, कुछ परेशानी के आसार थे या नहीं थे? दूसरा ये कि ये आप बताएं कि इस जीत को खासतौर पर कराची से अगर कंपेयर करें, कहाँ रेट करोगे? हाँ देखें इसी चीज़ को टेस्ट क्रिकेट कहते हैं। ये किसी भी टाइम आप इस चीज़ को इजी नहीं ले सकते हैं। बिल्कुल उस दौरान उन दोनों की पार्टनरशिप लगी, बहुत अच्छा खेलें, लेकिन हमारे माइंड में ऐसा कुछ नहीं था कि नेगेटिव थॉट नहीं थी कि हम हार जाएंगे। हमें हमारा मैसेज प्लेयरों को यही था कि 1 विकेट 2 विकेटें मिलेंगी तो हम इनको पकड़ लेंगे, और वही हुआ। जब हमने नया बॉल लिया, उसके साथ जब हमने फास्ट बॉलिंग स्टार्ट की, हसन अली ने, शहीन शाह ने आउटस्टैंडिंग उन्होंने बॉलिंग की, जिसकी वजह से हम मैच में वापस है। और दूसरा क्या क्वेश्चन था? कराची की जीत को और इस जीत में क्या फर्क महसूस कर रहे हो? दोनों जीत को कैसे कंपेयर करते हो? जीत देखें वो थोड़ा सा मेरे ख्याल से ये ज़्यादा मुश्किल जीत थी, क्योंकि वो काफ़ी सेट हो गए थे, और आखिरी दिन यू नेवर नो क्या बिहेव कर रहा था विकेट थोड़ा सा स्लो हो गया था, पुराना बॉल थोड़ा सा इजी आ रहा था बैट्समैनों के लिए, लेकिन जब नया बॉल हमने लिया तो वो जो मेरे ख्याल से 8 ओवरों का स्पेल था ना फास्ट बॉलर का, उसमें जो हमें जो विकेटें मिली उससे हम कम बैक पे आए, और वो जीत हमें काफ़ी, मेरे ख्याल से ये वाली जीत काफ़ी अच्छी रही हमारे लिए। जी प्लीज रिक्वेस्ट है सबसे एक एक क्वेश्चन करिएगा, क्योंकि सबको कितना करने के है, मैक्सिमम क्वेश्चन ले सकें, टाइम हमारे पास शॉर्ट है। जी प्लीज नेक्स्ट। बाबर बहुत बहुत मुबारक हो। बाबर, इस जीत के साथ पाकिस्तान इंटरनेशनल टेस्ट रैंकिंग में 5वें नंबर पर आ गया। कितना जरूरी था ये कि पाकिस्तान टॉप 5 में आए और उसे भी इंटरनेशनल स्टेज पर एक अच्छी टॉप टेस्ट टीम तस्वुर किया जाए? बहुत ज़रूरी था एज अ टेस्ट टीम हमारे लिए जीतना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि देखें एक टीम तैयार करने में या टीम बनने में टाइम लगता है, प्रोसेसर है, थोड़ा थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें आप सीखते हैं। टीम नई थी, चेंजिंग हुई थी, और नए प्लेयर आए थे, मुझे कप्तानी मिली, तो कोशिश यही थी कि जितना सिंपल चीज़ें रखी जाएं, जितनी प्लेयर्स को कॉन्फिडेंस दिया जाए, जितना प्लेयर को बैक किया जाए, और जो प्लेयर्स की गेम है, जो प्लेयर
जिस चीज़ में कंफर्टेबल है उनको वो चीज़ दी जाए, और रिजल्ट आपके सामने है, देखें हर प्लेयर ने अपना रोल अदा किया। टॉप 5 में आना कितना मतलब खुश आइंदे टॉप 5 में? बिल्कुल जी, बहुत बहुत खुशाइन बात है हमारे लिए एज अ टीम, और कोशिश करेंगे कि हम टॉप इस जीत को आगे जितने भी टेस्ट मैच आए उसमें ऐसे ही परफॉर्म करें और इस रैंकिंग को और ऊपर लाएं। अच्छा बाबर, जीत जो है वो बहुत सारी चीज़ों को छुपा भी देती है, तो आज हम जहाँ खड़े हुए सब वाह वाह कर रहे हैं, लेकिन एज ए पाकिस्तान कैप्टन, क्योंकि अभी भी जो मुल्क से बाहर हमारी जीत का रेशो है वो कम है, तो इस पाकिस्तान टीम को अब आप कहाँ देखना चाहते हैं? बिल्कुल ये चीज़ थोड़ी सी हमारी लैग कर रही है। देखें, जीत जहाँ भी हो, बाहर हो या पाकिस्तान हो, वो जीत है और उससे कॉन्फिडेंस आता है, और कोशिश यही है कि हम बाहर जाके भी जीतें और बैक करें प्लेयर्स को, क्योंकि वहाँ जाके आपको पता है थोड़ा सा टफ उनकी कंडीशंस में होता है, लेकिन ये नहीं है कि हम कोई भी ऐसी चीज़ होती है हम भी उनको टफ टाइम देते हैं, लेकिन जो मेन चीज़ें हैं ना, जो छोटी छोटी हम मिस्टेक करते हैं, वो जितना हम कम करेंगे उतना मेरे के लिए टीम के लिए अच्छा, और हम विनिंग रेशियो ज़्यादा हो जाएगा। जी अस्सलाम वालेकुम जी, मोहित शाह बात कर रहा हूँ। वालेकुम अस्सलाम। बाबर, ये बताइएगा कि देखें, जीत तो माशाल्लाह पाकिस्तान ने, मुबारक भी हो आपको, 2-0 से क्लीन स्वीप बड़े अरसे बाद पाकिस्तान की टेस्ट सीरीज में पाकिस्तान को मिली है, लेकिन कुछ हमारी कमजोरियां अभी भी हैं। ओपनिंग जो है, ओपनर्स डेवलप नहीं हो रहे, थोड़ा सा और भी टॉप ऑफ द ऑर्डर थोड़ा प्रॉब्लम है, तो इसको आगे जाके या आगे आने वाले सीरीज में जो कि अभी बड़ा गैप है टेस्ट क्रिकेट के लिए, लेकिन किस तरह देखते हैं कि कोई नए सिरे से तैयारी करनी पड़ेगी या कुछ इनको ही लेके चलेंगे, ये क्या है जी जरा थोड़ा सा? देखिए सर, मेरे ख्याल से टाइम लगता है चीज़ों को, नई चीज़ें, नई प्लेयर्स, नया कॉम्बिनेशन आपके सामने हमने खिलाया था। इमरान भट्ट का पहला मैच था, दूसरा मैच था सॉरी, लेकिन ये नहीं कि आप ये बोल रहे हैं कि वो उसने परफॉर्म नहीं किया तो उनको बाहर कर दें। देखिए, हम बैक करेंगे और कोशिश यही करेंगे जितना उनको कॉन्फिडेंस दिया जाए। ये चीज़ें बिल्कुल हम लैग कर रहे हैं, लेकिन इस पर भी हम काम कर रहे हैं कि ये चीज़ें कम हो। मिस्टेक देखें टेस्ट मैच में होती रहती हैं, लेकिन अच्छी टीम में वो है जितनी कम मिस्टेक करेंगे उतना टीम के लिए अच्छा है। जी नेक्स्ट है उमर शकूर। मैंने क्या जीत तो पाकिस्तान जी उमर है, उमर के बाद जोजी भाई हैं, देन रशीद शकूर है और देन अब्बास शबीर। ओके, थैंक यू रजा। बाबर, 2-0 जीतना आपके करियर के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहा। ज़ाहिर है आपने डेब्यू एज अ कैप्टेंसी किया, लेकिन इन 2 मैचेस में हमने देखा कुछ जगह पे काफी टेस्टिंग टाइम रहा आपके ऊपर, जहाँ पे कुछ क्रूशियल डिसीजन लेने थे आपने और उसमें से आप निकल भी आए। जैसे आज की बात करें स्पेशली, तो जब ये प्रेशर आपके ऊपर था तो एज अ कैप्टन आप क्या फील कर रहे थे? हमने देखा आज मिसबा ने भी आपको पुल किया, पहले सेशन में आप बाहर गए, कुछ डिस्कशन हुआ, फिर वापस आप अंदर आए, तो क्या चल रहा था? और अपनी अपनी कैप्टेंसी आपके होम में जो आपने की है, इसको एक्सप्लेन करेंगे और क्या क्या प्रेशर फील किया आपने? देखें, प्रेशर ऐसा फील नहीं हुआ मुझे। जब कोई चीज़, जिस चीज़ में वह कोई मेरे दिमाग में आती थी या कोई मुझे लग रहा था कि मैं डिसीजन लेना, तो मैं रिजवान के पास जाता था, अजहर अली के पास जाता था, जो मुझे लगता था उनसे पूछता, क्योंकि ये नहीं कि मैं डिसीजन लूँ और मैं वो उस पर स्टिक रहूँ। अब मैं प्लेयरों से पूछता था कि यार ये मैं करने जा रहा हूँ तो ये कर लूँ, तो वो प्लेयरों का और अपना एक थॉट होता था कि यार ये इस टाइम पे ये कर लें तो मेरे ख्याल से बेस्ट हो जाएगा। जो मेरी थिंकिंग जो मुझे समझ आ रहा था उस दौरान मैंने किया था। और दूसरी बार जो बाहर गया था वो वॉशरूम के लिए गया था, प्लानिंग के लिए। उस दौरान उन्होंने वो मुझे मेरे से बात की थी और बिल्कुल उस दौरान मिसबा भाई ने भी मुझे थोड़ा सा बताया था, तो वो चीज़ मुझे थोड़ी सी हेल्प हुई। थैंक यू जी जोजी भाई। अस्सलाम बाबर। वालेकुम अस्सलाम। बहुत बहुत मुबारक हो आपको। बाबर, ये थोड़ा सा एक्सप्लेन और थोड़ा करेंगे ये उम्र के सवाल पे ही कि कितना टेस्टिंग होता है कप्तान के लिए? आपको कैसा प्रेशर लग रहा था जब बौमा की और मार्करम की इतनी लंबी पार्टनरशिप लगी और कल शाम को भी वो वेंडर डूसन के साथ पार्टनरशिप हुई, तो कितना एक प्रेशर आपने फील किया और आपको इसको थोड़ा सा और इलाबोरेट करेंगे? बिल्कुल, देखें सेशन बाय सेशन आप प्लान लेके चलते हैं,
कभी सेशन आपके हक में जाता है, कभी आप किसी दूसरी टीम के हक में जाता है। देखें वो भी खेलने आए हैं और वो भी अपनी प्लानिंग के साथ आए हैं, तो कोशिश होती है जो हमने प्लान किया उस पर स्टिक रहें और पेशेंस रखें। देखें टेस्ट क्रिकेट जितना आप पेशेंस रखेंगे, जितना आप एज अ टीम पेशेंस रखेंगे, जितना आप पार्टनरशिप एज अ बॉलिंग करेंगे तो उतना आपके लिए अच्छा है। और जब आप पार्टनरशिप करते हैं एज अ बॉलर दोनों तरफ से, तो आपको विकेटें मिलती हैं और उससे फिर आपको कॉन्फिडेंस आता है। यही चीज़ें बताई गई थी और यही किया था कि जितना हम काम रहेंगे, जितना हम कूल रहेंगे, प्रेशर नहीं लेंगे, जो हमें प्लान है, जो हमने प्लान किया उस पर रहेंगे, तो वो आपके सामने हम अल्हम्दुलिल्लाह प्लान करें और हम मैच जीतें। जी शुक्र भाई, एंड देन जी अब्बास। बाबर, जिस तरह शुरू में आपने जिक्र किया, रिजवान से आपने शुरुआत की और फिर नौमान वगैरह का भी आपने जिक्र किया, तो हम ये सीरीज में देखते हैं कि टॉप ऑर्डर बैटिंग जो है वो इतनी कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस उनसे नहीं हुई। ओपनर, वन डाउन और इस तरह की चीज़ें रहीं। एक सेंचुरी फवाद की थी। तो इस सूरत हाल में जो आपके लोअर ऑर्डर थे, जो रिजवान से मामला शुरू होता था, इनका कितना ज़बरदस्त कंट्रीब्यूशन इस सीरीज में रहा? बॉलिंग तो रही हसन की और सबकी रही, शाइन की, लेकिन जो बैटिंग में जो इन्होंने जो सपोर्ट किया, फ़हीम अशरफ का जो है, तो ये कितना मतलब आप समझते हैं कि इस सीरीज में इंपॉर्टेंट रहा है रोल इन 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 खिलाड़ियों का? हाँ बिल्कुल, देखें ये चीज़ ये लोअर ऑर्डर पे हम लैग कर रहे थे और जैसे रोल नीचे बैट्समैनों ने रिस्पांस दिया, जिसने टेल एंडर्स ने रिस्पांस दिया, वो आउटस्टैंडिंग था हमारे लिए। काफ़ी हम इस चीज़ पे लैग कर रहे थे, फिर उन पे काम किया। और फ़हीम अशरफ का इधर आपके सामने, जिसना उसने न्यूजीलैंड में बारी की, फिर उसने कराची में बारी की और यहाँ पे बारी की। बाबर, अब्बास आपको आवाज आ रही है? अब्बास आवाज आ रही है आपको? अब्बास का माइक अब्बास आपका माइक म्यूट है। जी रजा, आवाज आ रही है आपको? बाबर, अपनी परफॉर्मेंस से कितने सेटिस्फाई हैं? क्या अप टू द मार्क समझ रहे हैं कि जिस तरीके से हम सोशल मीडिया पर भी देख रहे हैं और पूरी दुनिया में आपका एक नाम चल रहा है, अपनी परफॉर्मेंस से कितना सेटिस्फाई हैं? देखिए जैसे सेटिस्फाई होना चाहिए वैसा हुआ नहीं। गलती हुई है, उसे देखूंगा, डिस्कस करूंगा कि टॉप 5 जो हमारे बैट्समैन हैं इंक्लूडिंग यू, वो हमारे टॉप रन मेकर नहीं है। हमारे लिए जो बैटिंग लाइन के लिए कोई तशवीश का बायस नहीं है कि इस सीरीज का टॉप स्कोरर फ़हीम अशरफ है। सर नहीं, मुझे ऐसा कोई कंसर्न नहीं है। देखें फॉर्म अप एंड डाउन होते रहते हैं। कभी आप अच्छा करते हैं, कभी आप बुरा करते हैं। पिछले न्यूजीलैंड सीरीज में भी आप देख लें, टॉप ऑर्डर ने ही परफॉर्म किया था। हाँ देखें, परफॉर्म टॉप ऑर्डर में 1-2 करते हैं, उसके साथ आप छोटी छोटी पार्टनरशिप करते हैं। और बिल्कुल इस चीज़ पे मैं एग्री करता हूँ कि हमने जो मिस्टेक्स की हैं टॉप ऑर्डर ने, वो उस पर हम बात करेंगे और अगली सीरीज में वो चीज़ ना हो। जी मारिया आरफा प्लीज। अस्सलाम वालेकुम बाबर, पहले तो आपको बहुत ज्यादा मुबारकबाद। टेस्ट सीरीज हो गई, पहली सीरीज होम सीरीज थी, व्हाइट वॉश किया। बाबर आजम एज अ कैप्टन कितना खुद कॉन्फिडेंस जो वो फील कर रहे हैं, और नेक्स्ट सीरीज के लिए क्या प्रिपरेशन है जो T20 सीरीज है? बिल्कुल, देखें मेरा एज अ टेस्ट कैप्टन पहला सीरीज थी और अल्हम्दुलिल्लाह दोनों मैच जीते हैं। उससे कॉन्फिडेंस काफ़ी आया एज अ कप्तान। टीम पे काफ़ी कॉन्फिडेंस आया।
टीम काफी फॉर्म में आई है और कॉन्फिडेंस में आई है। देखें यही कॉन्फिडेंस लेके हम T20 में जाएंगे और ऐसे ही कम्पेटिटिव क्रिकेट खेलेंगे जैसे हमने टेस्ट मैच खेली, और जो भी मैच हो उसमें हम अपना 100% दें। जी आरफा। अस्सलाम वालेकुम बाबर भाई, अरफा फिरोज फ्रॉम जियो न्यूज़। बाबर भाई, आपके कैसे देखते हैं हमारी जो टेलेंडर्स हैं और जो हमारा लोअर ऑर्डर है वो काफ़ी हमारे स्कोर करके हमें देना शुरू हो गया है, तो बैटिंग कोच यूनुस खान की जो है इसमें किस तरह की कंट्रीब्यूशन आप देख रहे हैं, उनका जो वर्कआउट होता है बल्लेबाजों के साथ वो आप कैसा देख रहे हैं, उससे क्या हेल्प मिल रही है? देखें मेरे ख्याल से इसमें सारी मैनेजमेंट का रोल अदा है। सारे जो भी टेलेंडर है उनके साथ सेशन लगते थे। यूनुस भाई किसी को लेके वो अपना सेशन करवा रहे हैं, जिसका भी मिसबा भाई, शाहिद असलम, सब ने मेहनत की है और टेलेंडरों ने जिस तरह आपके सामने रिस्पॉन्स दिया है हमें पूरी टीम को, और जिस टाइम पे हमें चाहिए थे स्कोर उसी टाइम पे उन्होंने रन्स करके दिए, और उस वजह से हम मेरे ख्याल से वो बहुत वाइटल रन्स थे हमारे लिए, जिसकी वजह से हमें कॉन्फिडेंस आया और उसके बाद हम उसी चीज़ को लेके अंदर गए। जी थैंक यू वेरी मच। ये आप साथ ही रहेगा। हसन अली हमें ज्वाइन करें इन ए मिनट प्लीज। जी हसन आ जाए आप। एक बंदे मारा। थैंक यू जी। हसन अली हमारे साथ मैच में 10 विकेट्स लिए जी। क्वेश्चन आंसर सेशन स्टार्ट करेंगे जी। जाहिद फारूक मलिक, उमर एंड देन शाहिद हाशमी प्लीज। दैट भी माइक ऑफ है आपका। दैट भी आपका माइक ऑफ है, उसको प्लीज अनम्यूट कर लें। अस्सलाम वालेकुम हसन, मैं जाहिद फारूक मलिक हूँ बोल्ट टीवी से। अच्छा लगता है जब कोई भी पाकिस्तान का बॉलर जो है, और खास तौर पर गुजरांवाला से, मैं भी गुजरांवाला से, क्या खास थी जब आपने कम बैक किया है और एक मैच में 5 और 10 विकेट, क्या खास बात क्या थी? थैंक यू सो मच सर। और देखिए खास चीज़ यही थी कि ऑब्वियसली आई वाज इंजर्ड और मैं इंजर्ड था, और ख़ास चीज़ जो ये थी कि वो मुझे हार्ड वर्क था मेरा, जिस तरह मैंने पहले भी मेंशन किया बहुत सारी इंटरव्यूज़ में कि मैंने अपना हार्ड वर्क जो है वो नहीं छोड़ा। मेरा एम यही था कि मैंने वापस आना और वापस आके परफॉर्म करना। वापस आने का मतलब ये नहीं है कि वापस आए, मैच खेले और फिर चले गए। तो मेरा एम यही था, मेन एम यही था कि मैंने वापस आके जो है वो परफॉर्म करना अपनी कंट्री के लिए, अपनी टीम के लिए, और अल्हम्दुलिल्लाह जिसमें अल्लाह ताला ने आज मुझे इज्जत दी। हसन अस्सलाम वालेकुम, शाहिद हाशमी बोल रहा हूँ मैं। जब आप इंजर्ड थे, 1 साल से ऊपर तकरीबन बिल्कुल भी नहीं खेले, कितना मुश्किल वक्त था वो, और किसने इंड्यूस दिया, किसने कॉन्फिडेंस दिया कि नहीं हसन तुम में इतना है कि तुम्हारा करियर यहाँ पे खत्म नहीं होना चाहिए, तुम इंजरी से ओवरकम करके वापस आओ और कायद आज़म ट्रॉफी खेलो? देखिए शायद भाई बहुत टफ टाइम था मेरे लिए, और मैं आपको क्या बताऊं कि किस तरह मैं उसको बयान करना चाहूँ। मैं उस जहाँ वापस नहीं जाना चाहता कि आप इंजर्ड हो, आप एक घर में बैठे हो, ऊपर से कोरोना हो तो, और आप बाहर भी नहीं जा सके, तो मेरे लिए बहुत टफ टाइम था। बट आई रियली वांट थैंक्स मेरी वाइफ जो ऑलवेज विद मी और मुझे मोटिवेट करती रही। फिर मेरे जो बड़े भाई हैं उन्होंने मुझे बहुत मोटिवेट किया, उन्होंने मुझे एवरीडे मुझे बोलते रहे कि तुम कम बैक करेगा, कम बैक करेगा। फिर उसके बाद जिस तरह मेरे कुछ सीनियर्स प्लेयर थे, शुएब मलिक से मेरी जो बात होती रही, शुएब भाई ने बहुत सपोर्ट किया, और स्पेशली थैंक्स पीसीबी जिन्होंने मुझे जो है हर जगह पे मुझे सपोर्ट किया, मुझे मेरे रिहैब के लिए मुझे बाहर भेजा, और मेरे साथ बात करते रहे, मेडिकल पैनल जितना भी है हमारा। तो इन ये लोग थे जिन्होंने मुझे बहुत मोटिवेट किया। और स्पेशल थिंग जो थी वो मेरी खुद की थी कि मैंने हार नहीं माननी, मैंने जो है वो एफर्ट करनी है, मैंने फिट होना है और वापस आना है। आई स्टिल रिमेंबर कि मैं एक दिन में 4 बारी रिहैब करता था, और आई थिंक वो चीज़ जो चीज़ें आपको मोटिवेट करती हैं कि आप वापस आए, तो वही था कि मैंने अपना हार्ड वर्क जो है वो उसको अपने हाथ से नहीं जाने दिया। उमर एंड देन खालिद खान। हसन बैक ऑन द गेम, लंच पे जाने से पहले ज़्यादा साउथ अफ्रीका जो थी वो टॉप पे थी और काफ़ी ज़्यादा होप थी कि साउथ अफ्रीका गेम यहाँ से ले जाएगा। ऐसा क्या टर्न अराउंड हुआ ड्रेसिंग रूम में जाके लंच टाइम में? क्या ऐसा वकार ने बोला या क्या मिसबा ने, या क्या ऐसा मोटिवेशन आया कि वापस आके आप लोगों ने रैप अप किया?
बिल्कुल वो हमारे टॉप पे थे। साउथ अफ्रीका हमारे से ऊपर थी बिफोर लंच, और जब लंच में ब्रेक हुआ तो विक्की भाई ने बात की कि यहाँ पे जो है वो गिव अप नहीं करना और जस्ट कीप हिटिंग द बॉल ऑन राइट एरिया। और हमारा वही प्लान था कि हम एक जगह पे बॉलिंग करें, क्योंकि बॉल फास्ट बॉलर का ऊपर नीचे हो रहा था। तो और मेन की यही थी कि जहाँ जितने भी आउट हुए हैं आप देख लें वो स्टंप टू स्टंप हुए हैं। तो हमारा विक्की भाई ने यही बोला था कि नेवर गिव अप, कीप ट्राइंग, और अगर वो अच्छा खेल के जीत के ले जाए तो उनको वेल प्लेड है। अदरवाइज जहां पे एक विकेट मिलेगी वहां पे एक के साथ एक जरूर मिलेगी। तो वही हुआ कि एक राइट एरिया पे बॉलिंग की, और ऑब्वियसली हम वेट कर रहे थे नए बॉल का कि नए बॉल से कुछ ना कुछ होगा, और बिल्कुल नए बॉल से तो बहुत कुछ हो गया है। और विकी भाई ने यही बोला था कि जस्ट कीप हिटिंग ऑन द राइट एरिया। अस्सलाम वालेकुम। शुक्र भाई। हसन अस्सलाम वालेकुम, खालिद भाई फ्रॉम डॉन। तो ये बताओ कि आपने शुरू में अब सुबह जैसा स्टार्ट किया माशाल्लाह 2 बॉलों उसमें आपने 2 विकेट ले ली, फिर 4 ओवर का स्पेल करा के आप हट क्यों गए थे? कोई मतलब आपको कोई फिटनेस का मसला आ रहा था, क्या था? देखिए सर, ये एक टीम गेम है। ये कोई मेरे एक हसन अली की क्रिकेट टीम नहीं है कि हसन अली ने जो गेम में पैसे डाले हुए हैं और वही ओवर करता जाएगा। एक स्ट्रेटजी होती है टीम की, उस हिसाब से अब बिल्कुल 4 ओवर किए थे, मैंने 2 विकेट्स ली थी, और फिर उसके बाद जो हमारा प्लान था कि हम स्पिनर्स को वापस लेके आए, क्योंकि 2 विकेट्स हमें मिल गया। उस स्पिन के लिए बहुत कुछ था, तो अनलकी रहे हमारे स्पिनर्स के, उन्होंने इस तरह आउट नहीं किए। तो एक प्लान के तहत जो है वो बॉलिंग हो रही थी। ऐसा फिटनेस में कोई नहीं है। आप अभी से मुझे दोबारा 5 दिन का गेम जब वो खिला ले, मैं रेडी हूँ। अस्सलाम वालेकुम हसन। वालेकुम सलाम सर। हसन, काफी बातें हो गई आपकी परफॉर्मेंस पे। आपका एक अपना एक अंदाज था सेलिब्रेट करने का, वो जनरेटर आप मतलब ऑन करते थे। अब देख रहे हैं कि वो एक झूला जो है वो झूल रहा है, मतलब वो ऐसा लग रहा है कि बच्चे को गोद में लिया। थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर दें कि ये है क्या, क्योंकि लोग बहुत पूछ रहे हैं कि ये हसन अली ने क्या जो है ये कोई नया अंदाज इख्तियार कर लिया है सेलिब्रेट करने का। जरा इसको देखिए एक्चुअली सेलिब्रेशन स्टाइल मेरा वही और वही रहेगा। द थिंग इज के अल्लाह ताला मुझे जो है वो बेबी देने वाले हैं वेरी सून इंशाल्लाह। तो वाइफ जो है मैच देखने आई हुई है, और आई स्ट्रॉन्ग बिलीव कि उसी बेबी की वजह से जो है ये अल्लाह मेरे पे रहमत कर रहा है। तो वो जस्ट जो मेरा बेबी ड्यू है, माय बेबी इज ऑन द वे, तो उसी का है बस। उसी को जो है वो क्रेडिट गोज टू माय बेबी। और वाइफ क्योंकि मैच देखने आ रही थी, तो वाइफ को भी खुश करना पड़ता है, आपको पता होगा। चलो बहुत मुबारक हो, बहुत बहुत मुबारक। थैंक यू सो मच। जी आरफा प्लीज। ठीक है रजा भाई, मेरा क्वेश्चन हो गया, थैंक यू। ओके जी, शाकिर एंड देन मुदस्सिर, लास्ट 2 क्वेश्चन प्लीज। शाकिर आपको आवाज आ रही है? मुदस्सिर आपको? जी आ रही है आवाज। हसन भाई पहले तो आपको मुबारकबाद 10 विकेटों की। मैं तो जानना चाह रहा हूँ कि एक से बढ़कर एक विकेट थी, आप कोई एक विकेट बताएं जिसको हासिल करके महसूस हुआ कि अब हम जीत की तरफ गामजन हो गए। देखिए मेरे लिए सारी विकेट जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट थी, और इसलिए इम्पोर्टेंट थी कि हमें एज ए टीम विकेट्स चाहिए थी। बट आई थिंक जो एक सुबह अर्ली मॉर्निंग आते मैंने जो बोल्ड किया उसको, और उसके बाद जो उनके कैप्टन है डिकॉक की जो विकेट है वो बहुत की विकेट थी, क्योंकि डिकॉक ऐसा प्लेयर है उनका कैप्टन के जो आपके टर्न अराउंड कर सकता है विद इन सम टाइम। तो आई थिंक की विकेट ये 2 मेरी की विकेट होंगी, क्योंकि ये एक तो सेट प्लेयर खेल रहे थे कल से, और दूसरा जो है वो आते ही आउट हो गया, और साउथ अफ्रीका पे ज्यादा प्रेशर आ गया। क्यों? हेलो रजा भाई। हसन, बड़ी उम्दा परफॉर्मेंस, एक शानदार कमबैक, लेकिन आपकी परफॉर्मेंस माजी में T20 में भी बड़ी अच्छी रही, तो आप इस बार शाकिर आपकी आवाज बिल्कुल खत्म हो गई है, सॉरी। थैंक यू वेरी मच आप सबके ज्वाइन